Hello, everyone. So, today I wanted to touch upon one of the main foundational topics. Uh, agar, in my experience of working as a high performance psychologist for 6 years, and of earlier as well, being observant as an athlete, being in high performance setups, the foundation ऑफ सक्सेस अगर हम जिसको बोलते हैं, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बहुत बार बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम करते हैं, बट अगर आपका ये की कॉन्सेप्ट वीक है या लूज़ है, we can never and never guarantee success. It's just, it doesn't happen for us, okay? And the foundation to anything abundant in life, anything that we want to, if you're chasing success, comes down to self concept. How do you view your own self, okay? So self concept is how you see yourself, your beliefs, your thoughts, understanding of who you are, your abilities, आपकी personalities. It's the entire construct. इसके जो मेन मान लो की एस्पेक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसमें आपका सेल्फ बिलीफ आ जाता है। हाउ यू बिलीव, लाइक हाउ मच यू थिंक यू वर्दी ऑफ, इसमें आपका सेल्फ एस्टीम आ जाता है। हाउ डू यू वैल्यू योर सेल्फ, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम हाई परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट, आई एम प्रियवृंदा, सो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, आपकी सोशल सेल्फ कैसा है, दैट मीन्स हाउ यू थिंक others view you, that's very important, and आपकी सेल्फ इमेज, हाउ डू यू परसीव योर सेल्फ टू बी। सो इस सब कॉन्स्ट्रक्ट को मिला के, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को मिला के, आपका एक सोशल, आपका एक सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। एंड आई हैव ऑलवेज सीन that especially in the last 1.5 years is where I understood it all bottles down to your self concept. you know um, if anything is reflecting on the outside, if you're able to become successful, if you're able to perform better अपने matches में, it is bottling down to the fact आपको लग रहा है कि क्या आप worthy हो इस चीज़ के कि आप नहीं हो। तो सबसे पहले अगर आपको जर्नी पे निकलना है, where you want to have a better life, where you want to have a life which is beyond ordinary, where you are passionate about whatever you're doing in your life, ठीक है, अगर आपको कुछ भी beyond ordinary करना है, firstly, when I say beyond ordinary, let me just not put the pressure here and be like, if you want to be the greatest in your field, because that's usually something that really intrigues me and fascinates me, is just want to be one of the greatest, right? But agar if, let's say, your mind is not able to think about that for now, let's just talk about beyond ordinary. First, start with self concept, okay? Because see, nothing in your life will ever change if you don't change yourself. A. B. Most, I don't think, not a lot of people are lazy. I come across so many people who are so beyond hardworking, और फिर भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज all of us have been conditioned to work hard on our jobs and not on ourselves. That's it. That's where we're going wrong. लोग इतनी मेहनत करते हैं कोई जॉब में है तो वो जॉब्स में, कोई एथलीट है तो वो अपने एक स्पॉट में टेक्निकली फिजिकली इतनी मेहनत करते हैं, but their self concept, the way they view themselves, is just so weak. How do you even expect to get results? See, the world views you the way you view yourself. A. B. You get result based on your vibration within. I'm a magnet, so if I am feeling that I'm not worthy, what do I pull towards me? I'm not worthy. It's simple. If as an athlete, if I go on the ground and I have a feeling, what if I fail? What if it doesn't happen for me? I'm not feeling good enough. What do I pull towards me? So this is the role of a self-concept. If you are a professional, let's say, currently, you're earning, you have an annual income of 20 lakh, let's say, and you would love to get 30, 40, 50. But if you feel कि आप worthy नहीं हो, no matter आप कितने talented हो, no matter आप कितना ज़्यादा hard work करते हो, you will never be able to pull that potential. Okay? This is the role of your self-concept. How do you view yourself? आपको क्या लगता है आप कितने worthy हो? एक चीज़ तो मुझे बहुत clearly बहुत ज़्यादा एविडेंट है, क्लियर है। अगर आप स्कैन करो अपने आसपास, अपने सर्कल में, फ्यू पीपल हु यू थिंक आर रियली सक्सेसफुल,
and that is just not monetarily, it's beyond like overall successful, and few people who are not successful. आप ये देखोगे that has nothing to do with intelligence, nothing. Mostly it has nothing to do with how hardworking they are, because I have come across the most hardworking athletes, but वो results अपने convert नहीं कर पाते हैं. आई कैन नॉट गारंटी यू कि जितना आप हार्ड वर्किंग हो उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे. नो, इट डजंट हैपन. बट येस, आपका द वे यू व्यू योर सेल्फ, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ हाउ सक्सेसफुल यू विल बी. बहुत बार हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउट करते हैं, बहुत बार हमें सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होते हैं. तो अगर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है, तो हमारी सक्सेस भी बहुत हद तक इसी लेवल पे होगी. तो फर्स्ट, when I want to start with let's say becoming beyond ordinary, या हमें अपने बेस्ट वर्जन पे हम टैप कैसे कर सकते हैं, तो उसका नंबर 1 स्टेप है आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को पॉलिश करना है. आप बाहर एक्सटर्नल कितनी भी चीज़ों पे काम करते रहो, आप कितना भी ज़्यादा ओवर ट्रेन करते रहो, आप अपने आप को जॉब में कितना ज़्यादा आप ओवर टाइम करो, आप कितना भी ज़्यादा कुछ कर लो, बट जब तक आप इंटरनली अपने आप पे काम नहीं करोगे, आप कभी भी रिजल्ट्स को लॉन्जिटिविटी में कंसिस्टेंटली चेंज नहीं कर पाओगे. मे बी यू सी अ सडन सक्सेस, मे बी यू सी ए कॉम्पिटिशन में आप अच्छा खेल जाते हो, ठीक है, बट इफ़ यू वॉन्ट दैट थिंग टू बी मेंटेन्ड, यू हैव टू टैप विद इन. ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज. सो अंडरस्टैंडिंग as of now हमारा self concept कैसा है. I want to give you 2 tools. Okay, the first tool is draw yourself. So I don't want you to artistically draw yourself. You can just take a plain paper, और उस plain paper में आपके नाम का जो भी initial है आप वो लिख लीजिए बड़ा बड़ा. Like take a huge paper and just write, like for example for me it will be P. Just sketch yourself out, all those qualities, everything out on the paper that you think describes you. Some people it could be overthinking, strong, it just could be weak, calm, always thinking about the future, very negative, doubtful, not confident, whatever, however you think when you're all by yourself. बहुत clear perspective से just sketch yourself out. That's one thing. Okay, एक. Second is best friend perspective. जो भी आपको लगता है एनी वन पर्सन इन योर लाइफ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. व्हेन आई से अच्छे से, who knows your raw vulnerable side, not just the side that we like to show to people, who know us authentically, वो आपको कैसे डिस्क्राइब करेंगे as it is without a filter. Describe that out. Now those are the 2 ways that you understand what your self concept is. आपने 2 चीज़ें करी. टेक योर टाइम इस पर, डोंट रश इनटू इट. देन रिफ्लेक्ट. अगर आपके दिमाग में एक अपना एज ऑफ नाउ एक आइडियल वर्जन है, द वर्जन ऑफ यू दैट यू वुड वांट, लेट्स से इफ दैट इज़ अ 10 on 10, तो आपने जो दोनों एक्टिविटीज़ करके अपने आप को स्केच आउट किया है उसको रेट करो. इफ़ माई आइडियल वर्जन इज़ अ 10 on 10 ऑन अ स्केल, लाइक इफ दैट इज़ द एंड गोल, तो एज ऑफ नाउ ये करंट वर्जन जो मेरे सामने है, हाउ मच इज़ दिस वर्जन? गिव इट अ नंबर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. इफ दैट इज़ अ 5, that is a 4, 3, 2, then that is where we are right now. So that is our self concept for now. And now the second thing is going to be, this is where the ideal version is the goal that we would want to reach. So for starters, I just want you to take a journey with yourself, and on this journey let's start with just becoming aware about how do I view myself, who do I think I really am when I'm all alone. You could be surrounded around with people who are always telling you you're so talented, आप कर सकते हो, आप gifted हो, आप बहुत amazing हो. But what really matters is आप अपने आप को क्या बोल रहे हो 24/7. Because मेरे पास dominantly जो clients आते हैं, because I work in high performance, तो मेरे पास जो dominantly clients आते हैं, when I say dominantly, 95% of my clients have been told left and right by everybody that you're gifted, that you're talented, you're hardworking. So many times अगर उनके coaches रेफ़र कर रहे हैं, उनके officers रेफ़र कर रहे हैं, उनके parents, तो it always starts with they are so talented, ma'am, or they work so hard, they're so good, but they're not able to convert their practices into competition. इनको results वैसे नहीं मिल रहे हैं. First thing, self concept weak.
क्योंकि अगर हम कन्वर्जन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब है हम अपने आप को कैसे व्यू कर रहे हैं. इट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड इज व्यूइंग अस. सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ऑन द जर्नी ऑफ सक्सेस, start with your self concept. So first step is just becoming aware, and you can drop down your comments below and let us know how you view yourself, how is your self concept, and if you already have a few techniques that you know can help you to increase your self concept, which I will be covering in the next video. But starting may, let's just become aware about how we view ourselves. Okay, and all the very best. This is a beautiful journey that you will get on. And always remember, I'm going to say it once again, the biggest investment that you can make in your life is on yourself. It's on yourself, okay? And it only gets better, anything and everything, if you get better. So today onwards, let us start investing 30 minutes at least every day on this biggest investment that we have. Does that make sense? All the best. Have a wonderful day. And I'm really excited that you have decided to be on this journey. All right? Okay. Bye. Take care.